Good evening to all. Welcome to matrixdigilearn. So today we'll discuss about the two-dimensional geometry last part 2. First part रे हमें पढ़ी थिले circle and circle only पढ़ी थिले. आज complete करने बा जहाँ two-dimensional रे रहिला the related questions and fundamentals details पढ़ी नवा. So let's start. First हमें पढ़ीबा कौन कौन आ रिमेनिंग रही थिला हमर ट्रायंगल थिला ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल रंबस ट्रापेजियम पैरेललोग्राम ए सब गुडा रिमेनिंग बाकी रही जाइथिला तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करिया खाली जस्ट टिके टिके म आपन कहि नउची ट्रायंगल रो जदी म फर्स्ट स्टार्ट करूची तो फर्स्ट सपोज ट्रायंगल भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल अछि जेमते कि म कहबी इक्विलैटरल ट्रायंगल First like equilateral triangle, then right angle triangle, isosceles, right angled isosceles and scalene. Different type of triangles सब अच्छी. तो इस triangle लो मुखाली first diagram करने होचे, then directly हमें question solve करेगा. Suppose मुझे तो कहीं equilateral triangle. इटा होता है equilateral triangle A, B, C. That means each side equal and each angle also equal. तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल रो पेरीमीटर एंड एरिया केमती बाहरिबो तो एनी ट्रायंगल पई एरिया हमें फाइंड आउट करि परिबा एनी ट्रायंगल रो एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एटा जनरल फार्मूला एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स एटा जनरल फार्मूला एनी ट्रायंगल पई बट केतटा स्पेसिफिक ट्रायंगल पई हम केतटा फार्मूला पुट करबा इजी कैलकुलेशन पई बट एई फार्मूला रे पुट करले भी किछि भूल होबो नै तो फर्स्ट थिंग मु कहू छी जेमति कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पई एरिया इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 3a ए कोन ईच साइड को हमें ए कहि परिबा एटा होची इक्विलैटरल ट्रायंगल पई देन राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी देखि दबा तापर क्वेश्चन कर ओके स्टार्ट करबा राइट एंगल ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल कोन गोटे ट्रायंगल रो गोटे एंगल 90 डिग्री हेतिबो तो एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए राइट एंगल ट्रायंगल पई ए एंगल ता 90 डिग्री एटा ला एच दैट मींस हाइपोटेन्स एटा ला परपेंडिकुलर एटा ला बेस तो अपन पिथागोरस थ्योरम हिसाब रे हम पुट करबा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एटा ला पिथागोरस थ्योरम एटा अप्लाई हुए एंड सेम जिंस जदि हमें एरो पेरीमीटर बाहर करबा ईच साइड को ऐड कर देबा जदि एरिया बाहर करबा ताले से जनरल फार्मूला पकेबा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ओके ये होचे राइट एंगल ट्रायंगल पई नेक्स्ट हमें देखिबा आइसोस्केल्स ट्रायंगल मींस सम द्विबाहु त्रिभुज जोटा को हमें कहउछंदी दीटा बाहु समान हेतिबो दैट मींस एटा समान हेतिबो बट एटा अलग हेतिबो एटा होचे आइसोस्केल्स ट्रायंगल तार भी जनरल फार्मूला से पकई परिबा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट
तो हाइट एटी केउटा एटा हला बेस हाइट हबो एई पॉइंट रु जो परपेंडिकुलर टा ड्रॉ करबा एटा हबो हाइट एई हाइट टा केमिति बाहरिबो एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल आसिला एई वैल्यू टा गिवन थिबो बेस टा गिवन थिबो तो एटा हमें पिथागोरस थ्योरम पुट करके राइट एंगल ट्रायंगल रु पुट करि परिबा देन हमें हाफ इनटू बेस इनटू हाइट पुट करिबा ठीक अछि एटा होचे आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स पई एंड राइट एंगल आइसोस्केल्स मींस राइट एंगल हेतिबो एंड आइसोस्केल्स हेतिबो दैट मींस दीटा बाहु समान हेतिबो गोटे एंगल 90 डिग्री हेतिबो एटा जेतिके हबो एटा भी सेतिके हबो तो एटा हमें फाइंड आउट करि परिबा हाइपोटेन्स फार्मूला पकै करी then area half into base into height put करिबा then last one is scalan तो scalan ता कहि दउची scalan नो गोटे फार्मूला अछि सेटा कहि दबा तापर क्वेश्चन स्टार्ट करिबा scalan scalan means विषम बाहु त्रिभुज कोनोसी भी साइड्स इक्वल हेइ नथिबो all are different कोनोसी एंगल भी इक्वल हबनी कि कोनोसी साइड भी इक्वल हबनी आ पई गोटे फार्मूला अछि एरिया पई एरिया इक्वल टू s into s minus a s minus b s minus c ର स्क्वायर रूट एई a b c कोन सपोज एटा म नेमिंग करली a b c एई वर्टेक्स a रो ऑपोजिट साइड हला स्मॉल a वर्टेक्स b रो ऑपोजिट ता स्मॉल b वर्टेक्स c रो ऑपोजिट ता स्मॉल c एंड एई s ता कोन s होचे हाफ पेरीमीटर केमिति बाहरिबो इक्वल टू a plus b plus c divided by 2 रहला स्केलन पई फार्मूला एतिक थिला ट्रायंगल ऊपर नेक्स्ट हम देखिबा और स्क्वायर अछि ट्रापेजियम अछि सबुडा कहि दउची वन बाय वन तापर स्टार्ट करिबा then what square rectangle and square rectangle केमते थिबो एटा ला rectangle रो एरिया एटा ला लेंथ एटा ला ब्रेथ एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ पेरीमीटर 2 into length plus breadth सब हमें पढ़ी चंती खाली जस्ट के रिमाइंड करूची एटा ला रेक्टेंगल पे सेम जिंस स्क्वायर रो कोन हबो स्क्वायर रो हबो एरिया इक्वल टू a square perimeter equal to 4a a is the side एटा ला स्क्वायर स्क्वायर परे आउट आसीबो रम्बस क्वेश्चन बहुत गुडा अछि टिके फास्ट दिबा तापर देखिबा रम्बस तो रम्बस को टाइप रो एटा ला रम्बस तो एटा गोटे डायगोनल एटा अनदर डायगोनल सपोज फर्स्ट डायगोनल टा को मु दउची d1 सेकंड डायगोनल टा दउची d2 नेम तापर एरिया कोन हबो एरिया इक्वल टू हाफ d1 into d2 एटा होची रम्बस रो एरिया पेरीमीटर होची ईच साइड रो सम एटा ला रम्बस रो एरिया
देन आउ दुईटा फिगर रहिला गोटे पैरेललोग्राम गोटे ट्रापेजियम ट्रापेजियम कहि दउछ अपरे तापर क्वेश्चन स्टार्ट करबा ट्रापेजियम टा को टाइप रो एटा हला ट्रापेजियम ए जो ट्रापेजियम रहिला ए दुईटा साइड पैरेलल इक्वल नुहे पैरेलल ए दुईटा साइड पैरेलल तो आ पई एरिया कोन हबो एरिया इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides sum of parallel sides into height तो height ताले कोटा ए जो परपेंडिकुलर टा में ड्रा करूछंती एटा होची height एटा सपोज मु a नै जेबी एटा b नै जेबी एटा h हबो ताकू एमती भी मु लिखि परिबी हाफ into a plus b into h sum of parallel sides into height एटा ला ट्रापेजियम पे and out हला parallelogram last one is parallelogram then हम क्वेश्चन डिस्कस करिया parallelogram को टाइप रो एटा हला parallelogram ए parallelogram रो एरिया केमति बारिबो एठी हम गोटे डायगोनल ड्रा कर दबा ए डायगोनल ड्रा करिकरी ईच पॉइंट रो गोटे परपेंडिकुलर टाइन दबा क्वेश्चन नो डाटा हिसाब रे हम सब गिवन आसी दिबो ता परे जो ट्रायंगल गुडा फॉर्मेशन हैला ए ट्रायंगल रो एरिया टा बाहर करके सम कर दबा सपोज मु ए ट्रायंगल ए बड़ ट्रायंगल टा एरिया बाहर कर देली प्लस ए ट्रायंगल टा एरिया बाहर कर देली दीटा को ट्रायंगल को सेम ऐड कर देले तो तार एरिया हे जिवो ठीक है खाली जस्ट फिगर पई कहउतली एबे क्वेश्चन करबा हमें बहुत सारा क्वेश्चन अछि फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा the perimeter of an isosceles triangle is 100 centimeter गोटे isosceles triangle अछि जार perimeter दे 100 centimeter if the base is 36 centimeter find the length of the equal sides तले गोटे isosceles triangle first thing मोटे isosceles triangle बनेबी एटा ला गोटे isosceles triangle ए isosceles triangle रो से कोन कहउची perimeter टा दे देछि 100 centimeter one base दे देछि 36 से कहछि जो ए जो दुईटा साइड इक्वल साइड रहला आर वैल्यू टा केते सिंपल जिंस हमर पेरीमीटर रो फार्मूला कोन ईच साइड रो सम तो गोटे साइड गिवन अछि आ दुईटा साइड गिवन नै ताले टोटल साइड मिसी कि मते एठी देई देछि केते 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर देछि 100 सेंटीमीटर गोट बेस टा जदी 36 देला ताले अदर टू साइड्स केते हिजबो 100 माइनस 36 केते हिजबो 64 तो ए दुईटा साइड मिसी कि 64 पुन से कहछि दुईटा को इक्वल ताले कोन हिजबो ई साइड केते हिजबो 32 तो 32 हबो आंसर कंप्लीट खाली जस्ट फार्मूला और तार डायग्राम बनेबार अछि आ किछ नै नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा second question कोन अछि a triangle has an area of 615 centimeter squares गोटे ट्रायंगल रो एरिया टा गिवन अछि 615 सेंटीमीटर स्क्वायर्स one of its side is given as 123 centimeters गोटे साइड देछि 123 centimeters and then what is the length of the perpendicular that is dropped on that particular side from the opposite vertex ताले opposite vertex रु से जो बेस टा देछि जो साइड टा देछि से साइड को गोटे
परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जायछि से कहउछि ताले से एरिया टा केते हो वन तर से साइड टा केते हो बोली से पचारुछि त हमें डायग्राम फर्स्ट ड्रॉ कर दबा एनी ट्रायंगल गोटे मु बनै नेली एरिया दे दी 615 गोटे साइड दे 123 परपेंडिकुलर दैट इज ड्रॉप्ड ऑन दैट पर्टिकुलर साइड ए जो पर्टिकुलर साइड ऊपर को गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स ताले आर लेंथ टा से पचारि छ हमको ठीक अछि तो जदी आर लेंथ टा पचारि छी हमें जानि चंती जे कोनोसी ट्रायंगल रो एरिया केमिति बाहरिबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट जनरल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट एटा ला फार्मूला मते एठी गिवन अछि कोन बेस गिवन अछि 123 बट हाइट गिवन नाही किंतु मते एरिया टा गिवन अछि ऑलरेडी 615 तले एठी मु सॉल्व करबे इक्वेशन टा को सॉल्व करि करे h रो वैल्यू टा बाहर करबी तले हाइट h इक्वल टू केते हिजबो 615 अछि एपटे 123/2 अछि सेपटे रिवर्स एग्री मल्टीप्लाई हिजबो सिंपली कैंसिल कर देबा कन केते आसु देखिबा 5 रे कटि जाउची 5 into 2 10 तो कोथरे अछि सेंटीमीटर रे अछि तो हाइट ता हे वाला 10 सेंटीमीटर त माने एटा हे वाला 10 सेंटीमीटर ऑप्शन देखिबा 10 सेंटीमीटर कोठे अछि ऑप्शन ए खाली डायरेक्ट फार्मूला पुट करबा सॉल्व करबा देन थर्ड क्वेश्चन को जिबा बहुत सारा क्वेश्चन अछि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट फार्मूला पड़ना देन थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अछि two sides of an isosceles triangle are 12.5 centimeter each while the third side is 20 centimeter what is the area of the triangle एठी isosceles triangle देछि तीनटा का साइड गिवन अछि एरिया फाइंड आउट करिया पई कहिछि सिंपली डायग्राम ड्रॉ करिबा ओटा isosceles triangle each equal side देछि 12.5 बेस देछि 20 थर्ड साइड से कहउछि एरिया फाइंड आउट करिया पई एरिया केमते हबो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट फार्मूला पकेबा बट बेस तो गिवन अछि हाइट ता मते गिवन नाही बट ए हाइट ता मते फाइंड आउट करिया पई पड़िबो ए हाइट केमिति बाहरिबो गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करली एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल हेयला एटा रहला 12.5 एटा हला 20 तले एई पॉइंट ता केते हबो आइदर हमें सेम मेथड करि परिबा नले आउरी इजी हे जिवो जदि हमें स्केल लाइन भी पके दबा भी जिवो किछि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिया भी दरकार नाही स्केल लाइन फार्मूला पकेले तीनटा साइड दे देछि स्केल लाइन फार्मूला रे भी हे जिवो केमिति हबो फर्स्ट हमें s बाहर कर दबा s इक्वल टू a plus b plus c by 2 12.5 plus 12.5 plus 20 divided by 2 केते हिजबो ये वाला 25 ए 20 45 45 by 2 22.5 तो 22.5 वाला s ताले एरिया केते हिजबो s into s minus a into s minus b into s minus c रो स्क्वायर रूट फार्मूला s टा केते 22.5 तो 22.5 माइनस a टा केते 12.5 तो 12.5 जदि हमें सबट्रैक्ट करबा एथिरु केते हिजबो एठी 12.5 में सबट्रैक्ट कर देबी 10 हिजबो इनटू
अगेन s माइनस b b टा भी 12.5 अगेन 10 हे जीवो इनटू c टा होछ केते 20 तो 12.5 रु 20 माइनस कर देबी केते हे जीवो 2.5 तो एतिक आसीला परे आको खाली सिंप्लिफिकेशन करनबा केते आसु आंसर 10 into 10 into 2.5 केते हे जीवो 2.5 रे 100 मल्टीप्लाई कर दबा 250 into 22.5 तो सिंपली आपको भी हमें यदि आउट के इजी कर दबा 225 डिवाइडेड बाय मैं आपको कर दउची केते 10 कर दउची 10 कर देले गोटे जीरो कैंसिल हो जाउची सिंपली 225 रे 25 मु मल्टीप्लाई कर देबी जति के आसीबो देखे देबो 25 25 12 55 5625 तो 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं तो नन ऑफ दिस होबो खाली कैलकुलेशन करबा आ किछ नहीं एटा थिला स्केल लाइन रो गोटे क्वेश्चन थिला एटा स्पेस होन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ता टिके देखिबा कोन हबो एटा स्केल लाइन रो गला हां एटा आ गोटे क्वेश्चन से आसिला देखो what is the area of an equilateral triangle of side 16 cm एटा गोटे ट्रायंगल रे आसिला इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कोन हम तो ऑलरेडी पढी सारी चंती डायग्राम ड्रा करली इक्विलेटरल ट्रायंगल रो से कहूची साइड देचे 16 ता माने ईच साइड 16 सेंटीमीटर कहीं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल रो ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल तो जदी साइड देला 16 सेंटीमीटर से कहूची एरिया डायरेक्ट फार्मूला पुट करबा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कोन √3/4 into a square a means side रो square तो एटा को सॉल्व करबा √3/4 into 16 into 16 तो कैंसिल कर दियो 4 64 √3 64 √3 देखियो ऑप्शन में अछि 80 डी ऑप्शन एटा गला थिला एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल रो 2D टा जे कंप्लीट करबा नेक्स्ट क्लास अलगा किछ पढिबा एटा इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट देखिबा एटा असला गोटे ट्रापेजियम रो क्वेश्चन असला ट्रायंगल रो किछटा क्वेश्चन गला एबे असला ट्रापेजियम रो क्वेश्चन तो देखो एटा ट्रापेजियम रे कोन दैछि find the area of trapezium whose parallel sides are 20 cm and 18 cm हमें जे डायग्राम ठीक से बने दबा ताले इजीली हे जिवो गोटे ट्रापेजियम दैछि जार दुटा पैरेलल साइड रो लेंथ दैछि गोटे 20 गोटे 18 and the distance between them is 15 cm दुटा पैरेलल साइड भीतर डिस्टेंस दैछि 15 cm ताले से कोन फाइंड आउट करिया पई कहिछि एरिया फाइंड आउट करिया पई कहिछि ठीक अछि फर्स्ट थिंग मु ट्रापेजियम गोटे बनेबे एटा गोटे ट्रापेजियम हे गला से कहछि ट्रापेजियम रो दुटा पैरेलल साइड्स दैछि गोटे 18 गोटे 20 पैरेलल साइड को दुटा एटा एंड एटा तो गोटे 18 माने स्मॉल टा 18 आ गोटे 20 दैट मींस एटा 20 and the distance between them is 15 cm distance means ए पैरेलल साइड्स भितरे डिस्टेंस त माने ए पॉइंट रो मो जो परपेंडिकुलर ड्रा करबे एटा त डिस्टेंस ता सेटा दैछि केते 15 cm एबे से कोन फाइंड आउट करिया पई कहिछि ट्रापेजियम रो एरिया तो एरिया रो डायरेक्ट फार्मूला हम जानि चंती ट्रापेजियम रो एरिया फार्मूला कोन 1/2 half into sum of parallel sides into height एटा ला फार्मूला से फार्मूला रे हम पुट कर दबा
हाफ इंटू दीटा पैरेलल साइड्स सम केते आछी 18 प्लस 20 इंटू हाइट हला 15 सॉल्व कर दबा हाफ इंटू 38 इंटू 15 19 15 को काटे दबा 19 ने 285 तो 285 होगा आंसर डायरेक्ट फार्मूला पुट करबा आंसर बाहर करबा खाली फार्मूला हमर मन थिबा दरकार ट्रापेजियम रो फार्मूला कोन हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट एटा वाला ट्रापेजियम पे क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कार अच्छे देखिबा the ratio of the length and breadth of a rectangle एबे rectangle ऊपर गोटे क्वेश्चन आसिला the ratio of the length and breadth of a rectangle is 4:3 and the area of the rectangle is 6912 square centimeter find the ratio of the breadth and the area of the rectangle से कहूची गोटे rectangle देची जार length breadth रो ratio टा given अछि and तार area टा given अछि से बे क्वेश्चन पचाउची find the ratio of the breadth and the area breadth और area रो ratio टा केते होबो ठीक अछि यदि लेंथ और ब्रेथ रो रेशियो टा देछि म सेटा सिंपली लिखि देबी सपोज लेंथ टा केते अछि 4:3 अछि तो 4x नै जाओ ब्रेथ केते अछि 3 3x नै जाओ तो एरिया केते हि जिवो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 4 into 3 4x into 3x 12x square बट ए 12x square रा वैल्यू टा गिवन अछि ऑलरेडी हमको 6912 that means 12x square is equal to 6912 ताले x square टा केते हिजबो डिवाइड कर दबा 12 को 12 ले 5 पकेली 60 60 ले 9 91 12 ले 7 पकेली 84 7 72 12 6 जा तो 576 है x स्क्वायर वैल्यू ताले x रो वैल्यू केते हिजबो 576 रो स्क्वायर रूट 576 स्क्वायर रूट केते हिजबो 24 ओके x रो वैल्यू फाइंड आउट करने ले यदि x रो वैल्यू फाइंड आउट होला ताले लेंथ टा केते हिजबो 4 into 24 ब्रेथ केते हिजबो 3 into 24 96 एटा हला केते 72 कहार वैल्यू पचारची रेशियो ऑफ ब्रेथ टू द एरिया ब्रेथ केते वाला 72 त माने रेशियो केते हिजबो 72 डिवाइडेड बाय एरिया अछि 6912 एटा को सिंपलीफिकेशन कर दबा जति आसीबा आंसर 1:3 अछि माने एटा डिविजिबल हो जाउछि कोथरे ओटे 72 रे डायरेक्ट पुट कर दबा 6 रे आसीबो कि 72 8 6 देखिबा 400 1:2 केते आछे आ नले सिंपलीफिकेशन कर दे 2 रे आउरी जे जिवो
96 1:96 फर्स्ट ऑप्शन टा सिंप्लिफिकेशन कले 72 99 पकेले 96 रे डिवाइड कले एटा हे जाउची 6912 तो आंसर हो 1:96 से रेशियो देइथिला एरिया दे देइथिला तो से एबे पचारथिला हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करले एरिया तो गिवन अछि डायरेक्ट रेशियो पुट करिवा क्लियर ये क्वेश्चन भी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जिबा एटा थिला स्क्वायर ऊपर क्वेश्चन थिला स्क्वायर ऊपर आउरी बहुत सारा क्वेश्चन हेई परिबो देखिबा आगु थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि A OR in the form of a circle of radius 3.5 meter is bent in the form of a rectangle whose length and breadth are in the ratio of 6:5. What is the area of the rectangle? हाँ गोटे भलो क्वेश्चन अछि ए टाइप रो क्वेश्चन आसे प्राय टाइम से कहछि गोटे OR अछि जे कि गोटे सर्कल फॉर्म रे अछि जहार रेडियस टा गिवन अछि 3.5 मीटर से कहछि सेही OR टाकू बेंड करके गोटे रेक्टेंगल बना जिवो जहार लेंथ एंड ब्रेथ रो रेशियो टा देछि 6:5 क्वेश्चन पचाछि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ताले से जो रेक्टेंगल टा फॉर्मेशन होबो तार एरिया टा केते होबो तो फर्स्ट थिंग जदि हम एरिया रो लेंथ रेक्टेंगल रो एरिया फाइंड आउट करूछन्ती ताले लेंथ ब्रेथ जानिबा निहाती दरकार बट लेंथ ब्रेथ रो एटी रेशियो टा देछि बट वैल्यू हमें जानि नांती तो फर्स्ट थिंग हमें ए जो रेशियो अछि आरो वैल्यू टा को हमको फाइंड आउट करिया पय पड़िबो वंस ए वैल्यू टा हमें पाइ जिबा ताले हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पाइ जिबा तो एई वैल्यू टा पाइबा पय हले हम क्वेश्चन रे लिंक दे जेठी सर्कल सहित से कहूँ सर्कल को ओपन करके रेक्टेंगल बना होची ता माने कोन सर्कल जो बना है ताकू जदि बेंड करके गोटे रेक्टेंगल बना होची मींस से सर्कल रो पेरीमीटर टा जति के हबो गोटे रेक्टेंगल रो पेरीमीटर टा सेति के हबो दैट मींस एटा सपोज एटा गोटे सर्कल थिला तार रेडियस टा देइची केते 3.5 देइची एटा देइची 3.5 से कहूँ ए सर्कल ए ओयर टा को ओपन करके गोटे रेक्टेंगल बनैबा जार लेंथ और ब्रेथ रो रेशियो देइची 6:5 आर एरिया टा पचारिची तो एटा को ओपन हेकि एटा हेइची माने दैट मींस आर पेरीमीटर जति की हबो यार भी पेरीमीटर सेम हबो तो ए पेरीमीटर टा में फाइंड आउट कर देले हेइजबो तो पेरीमीटर टा केते हबो आर पेरीमीटर फर्स्ट टाइम बाहर करबा सर्कल रो पेरीमीटर तो सर्कल पई कोन देइची रेडियस देइची आर केते देइची 3.5 ताले पेरीमीटर कोन हबो 2 पाई आर 2 into 22/7 into 3.5 तो एटा को हमें सॉल्व करबा एटा केते हे जिवो हम जदी पॉइंट उठे देई मते टिके इजी हे जिवो 35/10 कर दोची एठी 5 रे कटि गला एठी देखो 2 रे 5 कटला 5 5 कैंसिल हे गला 22 22 हेला कोन ए पेरीमीटर टा हेला 22 जदि पेरीमीटर टा 22 हेला एई पेरीमीटर टा हमारा रेक्टेंगल रो पेरीमीटर सहित समान दैट मींस 2 into length plus breadth 2 into length plus breadth is equal to 22 but length plus breadth ए जो 22 टा गिवन अछि एटा लेंथ और ब्रेथ मु जानि नै सेटा रेशियो रे देछि ताले एटी लेंथ और ब्रेथ रो सम ता केते मु पाइली 11 कहिना 2 टा पर मल्टीप्लाई अछि डिवाइड होला 11 लेंथ एंड ब्रेथ रो सम देला 11 एठी लेंथ एंड ब्रेथ रो रेशियो देछि 6:5 तो माने ये भी आकु भी देखो ऐड करले 11 होछि आकु भी ऐड करले 11 होछि दैट मींस ए जो लेंथ देछि ए लेंथ टा 6 मीटर आसिला 6 सेंटीमीटर ना मीटर एंड ब्रेथ टा 5 मीटर आसिला तल से कहूछि कोन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर दबा लेंथ इनटू ब्रेथ 6 into 5 30 मीटर स्क्वायर 30 मीटर स्क्वायर होबा आंसर 30 स्क्वायर मीटर को डेट है क्वेश्चन वेरी इजी बट हमको फर्स्ट से जो क्वेश्चन लैंग्वेज रो डायग्राम टा ड्रा करिया को पड़िबो कोन मीनिंग देइ छै सेटा फाइंड आउट करिया पई पड़िबो पहले क्वेश्चन लैंग्वेज डिफर देइ छै नले क्वेश्चन इजी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
एठी आ गोटे क्वेश्चन अछि देखिबा कोन देछि an order was placed for the supply of a carpet whose length and breadth were in the ratio of 3:2 so गोटे carpet order करा जाइछि जहार length and breadth रो ratio टा देछि 3:2 subsequently the dimension of the carpet were altered so that its length and breadth were in the ratio 7:3 से कहछि अगेन आउ थरे सेटा चेंज हे गला जहार के डायमेंशन से कार्पेट रो रहला एबे 7:3 लेंथ एंड ब्रेथ रो एबे से कहछि बट where was no change in its perimeter that means जदि हमें लेंथ ब्रेथ रो तार डायमेंशन भी चेंज करला परे भी ता पेरीमीटर टा चेंज हला नै पेरीमीटर टा जति रहबा कथा सेति के अछि then find the ratio of the areas of the carpet in both the cases that means both जो dimension change हला both figure रे जो एरिया टा बाहरिबो से एरिया रो रेशियो टा फाइंड आउट करिया पई कहिछि तो फर्स्ट थिंग हमको एरिया बाहर करिया पई पड़िबो तो एरिया बाहर करिया पहले हमको कोन करिया पई पड़िबो लेंथ इनटू ब्रेथ दीटा को दरकार तो लेंथ ब्रेथ सब रेशियो रे देइछि तो से रेशियो रो वैल्यू गुडा हमको फाइंड आउट करिया पई पड़िबो किंतु एठी देइछि पेरीमीटर टा सेम रहइबो ताले म एठी नै जाउछि से पेरीमीटर को इक्वल करि देबी रेशियो टा आसी जिवो फर्स्ट केस रे जदि म देखिबी लेंथ सपोज अछि 3x सेकंड केस फर्स्ट केस रे ब्रेथ अछि 2x तो एठी तार पेरीमीटर केते जिवो 2 into length plus breadth that means केते जिवो length plus breadth 5x into 2 10x सेकंड केस पई लेंथ होउची 7x ब्रेथ होउची 3x ताले एठी 2 into length plus breadth सॉरी एठी x नै छै एठी हमें y नै जिबा नले कंफ्यूज होबा 7y 3y इक्वल केते जिवो सेम जिंस 10y ही जिवो into 5 एठी 10 into 220 ये हला 20y ये हला 10x एबे से कहूची पेरीमीटर टा चेंज होबनी सेम रहिबो ताले 10x रो वैल्यू इज इक्वल टू 20y दैट मींस x इक्वल टू 2y तो x y भीतर रिलेशन आसी होला एबे से कहूची रेशियो ऑफ द एरिया ताले एरिया फाइंड आउट करिया पई पड़िबो तो फर्स्ट रो एरिया केते ही जिवो फर्स्ट केस रो एरिया ही जिवो 3 into 2 6x square सेकंड केस रो एरिया केते ही जिवो 7 into 3 21y square तो एई दी जनकर रेशियो पचरिची फर्स्ट टू सेकंड तो दैट मींस हम कोन बाहर करे पई पड़िबो 6x square by 21y square रो वैल्यू टा रेशियो टा बाहर करे पई पड़िबो एपोर्ट साइड रे करूची 6x square divided by 21y square यार रेशियो ऑलरेडी देखो x रो वैल्यू मु 2y फॉर्म रे पाइची तो सबुडा को मु एबे y रे कन्वर्ट कर देबी 6 into 2y रो स्क्वायर divided by 21y square 6 into 4y square divided by 21y square y square कैंसिल हे होला ये होला 24 divided by 21 तो एटा 3 रे भी कटि जिवो 8:7 ऑप्शन बी बट एते बड़ क्वेश्चन थिला बट तार क्वेश्चन मीनिंग बुझी करी लिखिबार अछि ताले इजीली हे परिबो 8:7 असला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि park in the form of a right angle triangle has a base and height of 10 meter and 15 meter respectively find the area of the park एटा सिंपल क्वेश्चन था गोटा देछि राइट एंगल ट्रायंगल ला देछि एरिया टा एतरे किछि डिफिकल्टी नाही एटा डायरेक्ट हे जिवो से कहै छै गोटा राइट एंगल ट्रायंगल रो पार्क अछि जार बेस देछि हाइट देछि बेस टा 10
एंड हाइट है 15 10 into 15 तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डायरेक्ट पुट कर दवा 75 ये क्वेश्चन है किसी नहीं एटा छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन there is a rectangular garden whose length and width is 60 meter and 20 meter. There is a walkway of uniform width around the garden. Area of the walkway is 516 square meter. Find the width of the walkway. हाँ एटा गोटे भल क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन आसे एग्जाम रे आर गोटे शॉर्ट ट्रिक भी अछि कहि देबी देखो ये गोटे रेक्टेंगुलर गार्डन अछि whose length breadth दे देछि एटा गोटे रेक्टेंगल जार लेंथ अच्छी 60 breadth अच्छी 20 there is a walkway of uniform width around the garden आर आउटसाइड रे गोटे walkway अच्छी गोटे walkway अच्छी around the garden area of the walkway is 516 square meter आर एरिया टा दे देछि ए जो पाथ रो एरिया टा दे देछि 516 find the width of the walkway ए width टा पचारि छि केते हबो तो एटा केमिति फाइंड आउट करबा देखो हमें एटा ट्रेडिशनल करबा दैट मींस आर ए जो लेंथ पचारि छि ए एरिया टा केमिति बारिबो ए बड़ रेक्टेंगल रो एरिया माइनस छोटो रेक्टेंगल रो एरिया फाइंड आउट करला परे ए एरिया टा बाहरिबो तो ताको पुट करके हमें सॉल्यूशन करि परिबा केमिति हबो सपोज मु बिग रेक्टेंगल लो बाहर करबी एरिया केते हबो ये स्मॉल टार देइथिला तो केते मीटर विड्थ मते जणा नाही मु एठी x ने भी इस साइड रे तो एटा टिके लेंदी हबो गलाळो काहे कि ना एठी एपट x बढ़िला एपट x बढ़ला 2x बढ़िबो त माने लेंथ ता केते हिजबो 60 थिला 60 प्लस 2x हिजबो इनटू 20 प्लस 2x हिजबो एटा ला बिग रेक्टेंगल रो एरिया पुनी स्मॉल रेक्टेंगल रो एरिया बाहर करबा केते हिजबो 60 into 20 एबे कोन करबा ए दुटा को सब्ट्रैक्ट करबा ए दुटा को सब्ट्रैक्शन कला परे जो वैल्यूटा आसीबो सेटा देछि 516 ताले से पचारि छि से x रो वैल्यूटा केते तो एटा टिके लेंदी हेजबो कारण आकु मल्टीप्लाई करबा एटा इक्वेशन आसीबो ताकु पुनी सॉल्व करबा तार शॉर्टकट फार्मूला गोटे अछि एरिया ऑफ पाथ जोटा हमें कहउचंती एरिया ऑफ पाथ में फार्मूला कोन एटा कोन आउटसाइड रे अछि ना इनसाइड रे अछि आउटसाइड रे अछि तो आउटसाइड रे जदी अछि त पय शॉर्टकट फार्मूला रहउची 2 into width of the path into length plus breadth plus width of the path plus 2 into width of the path एटा ला शॉर्टकट फार्मूला आउटसाइड रे अछि width हमको गिवन नहीं सेटा को हमें से x रे पुट करबा 2x into length देछि केते गोटे 60 गोटे 20 60 plus 20 हला 80 plus 2 into width of the path 2x आर वैल्यू टा गिवन अछि 516 से कहउची से width पार्ट ता केते x टा केते एटा को खाली बे हमें सिंपली सॉल्व करबा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप रा आसीबो 160x plus 4x square equal to 516 तो एटा को सॉल्व करले 4 रे हमें कैंसिल कर देले हे जिवो x square plus 40x minus 144 equal to 0 एबे एटा को सॉल्व करि दबा को दुटा नंबर को मल्टीप्लाई करले 120 44 सब्ट्रैक्ट करले 40 तो जोटा आसबो सेटा को सॉल्व करला परे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हे जिवो ठीक है
खाली जस्ट फार्मूला पुट करके करबा क्लियर ये क्वेश्चन भी इजी खाली क्वेश्चन रो वैल्यू टा फाइंड आउट करिया पड़िबो नहला को एमती -b² + 4ac पकई करले भी हे करिवो खाली सिंप्लीफिकेशन करिवार अछि आ कुछ नै आ गोटे क्वेश्चन आसिला सर्कल लो if a circle and a square have the same area then what will be the perimeter of the square if the diameter of the circle is 8 cm एटी सर्कल एंड स्क्वायर मिक्स करके दिया जाइछि से कहूछि diameter of the circle दैछि 8 cm circle रो area is equal to if a circle and square have the same area square रो area और circle रो area सेम रहइबो perimeter टा बाहर करबा square रो तो गोटे सर्कल रो जो दैछि गोटे सर्कल अछि सर्कल रो कोन दैछि डायमीटर दैछि डायमीटर ला 8 ताले रेडियस टा केते हिजबो 4 रेडियस टा 4 हेले तार कोन एरिया समान दैछि तो पाई r स्क्वायर फाइंड आउट कर दबा पाई r स्क्वायर इक्वल टू 22/7 into 4 into 4 तो एटा को एटा सिंपल पॉइंट रे रहइबो एति थाउ आकु सॉल्व करबानी एटा ला पाई r स्क्वायर से को जे एटा इक्वल हबो का सहित स्क्वायर रो एरिया सहित तो स्क्वायर रो एरिया कोन a स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 into 4 into 4 ताले a रो वैल्यू फाइंड आउट करबा एटा पाई रखि दियो एटा डिविजिबल न होउची पाई थाउ कारण ऑप्शन ओटा पाई रे अछि पाई ये हे जाय छी केते 4 into 4 तो a रो वैल्यू केते हे जिवो 4 पाई 4 रूट पाई a रो वैल्यू हम फाइंड आउट करनेले a मींस साइड ऑफ द स्क्वायर एबे कोन पचरी छी if the then what will be the perimeter of the square a फाइंड आउट कर देले एबे पेरीमीटर पाइबारे किछि डिफिकल्टी नै perimeter equal to 4a equal to 4 into 4 root pi that means 16 root pi 16 root pi have answer complete next question को जिबा एठी डेटा में इक्वल कर दबा फर्स्ट सर्कल एरिया एंड स्क्वायर रे एरिया सेटो a रो वैल्यू फाइंड आउट करले a पाइला पारे 4 एटा केते नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा विषय पाथ रो गोटे क्वेश्चन आसला देयर इज ए पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड outside the rectangular field of the length 13 meter and breadth 9 meter find the area of the path एटा गोटे सेही टाइप रो क्वेश्चन एटा गोटे रेक्टेंगल तार आउटसाइड रे देइची डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला पकेबा एते लेंदी करबानी केते देइतला 2 मीटर वाइड ए वाइड टा देइची 2 मीटर लेंथ देइची 13 ब्रेथ देइची 9 से कहै छै पाथ ऑफ एरिया रो पाथ टा केते एरिया ऑफ पाथ डायरेक्ट मु फार्मूला पुट करबी शॉर्टकट फार्मूला एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटसाइड रे अछि तो 2 into width of the path into length plus breadth plus 2 into width of the path 2 into width केते गिवन अछि 2 अछि length अछि 13 plus breadth 9 plus 2 into width of the path हला 4 एटा खाली सिंपलीफाई कर दबा 4 into ये 9 4 13 13 26 26 into 4 94 sorry 104 104 मीटर स्क्वायर तो 104 अच्छे ऑप्शन ने हां एटा हो आंसर एटा शॉर्टकट फार्मूला ले दी लाइन नै होला जदी हमें ट्रेडिशनल करबा
फास्ट ए एरिया रो वैल्यू फाइंड आउट करबा ए स्क्वायर रेक्टेंगल रो फिर बड़ रेक्टेंगल रो वैल्यू फाइंड आउट करबा पुनी दिटा को सबट्रैक्ट करला परे जे एरिया टा बाहर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ये क्वेश्चन में कौन अच्छी A painting is painted on a cardboard 19 centimeter and 14 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin in centimeter square. এটা भी सही टाइप रो क्वेश्चन अछि देखो जोटे कार्डबोर्ड अछि रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड अछि पेंटिंग इज प्रिंटेड ऑन ए कार्डबोर्ड रो लेंथ देछि 19 ब्रेथ देछि 14 such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides त माने मार्जिन अछि माने भीतर थिबो एटा इनसाइड रे आसिला से सब आउटसाइड रो क्वेश्चन थिला एटा इनसाइड रे आसिला 1.5 रो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन ए जो मार्जिन नो एरिया दैट मींस पाथ रो एरिया पचरिछि सेम जिंस ए शॉर्टकट फार्मूला में पुट कर दबा एटा इनसाइड रे अछि एरिया ऑफ पाथ हो 2 into width of the path into length plus breadth minus 2 into width of the path सेठी प्लस रे होतला एठी माइनस रे होबो width केते अछि 1.5 2 into 1.5 केते आइबो 3 लेंथ केते अछि 19 plus 14 minus 3 एति की सॉल्व कर दबा ये 19 से 14 केते जे 19 से 23 23 10 33 33 plus 33 minus 3 30 3 into 30 that is 90 90 ऑप्शन में नहीं कोड रॉन्ग होला देखि दवा ଟିକେ 19 14 तो ठीक अच्छे आंसर ठीक अच्छे बाकी सेठी ऑप्शन में भी भूल देछि एरिया ऑफ द पाथ देछि 90 एठा गोटा ऑप्शन छाडी देछि बोधे नन ऑफ दिस क्लियर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर दबा एटा सही टाइप रो क्वेश्चन एटा क्रॉस रोड रे अछि क्रॉस रोड रे भी क्वेश्चन आसे क्रॉस रोड पे भी गोटे शॉर्टकट फार्मूला अछि क्रॉस रोड रो फार्मूला टा हम कहि दउछु फर्स्ट तापर क्वेश्चन करबा क्रॉस रोड एरिया एरिया रो शॉर्टकट फार्मूला कोन होबो सेठी 2 into width थिला एठी ओनली width रहइबो लेंथ प्लस ब्रेथ रहइबो माइनस width रहइबो एटा ही शॉर्टकट फार्मूला एटा इजीली हमें कैलकुलेट कर दे परिबा क्वेश्चन खाली पढिबा डाटा कोन देछि देखिबा से हिसाब रे फिल करबा कोन देछि ए फील्ड ऑफ 360 डायग्राम कर दउछि 360 मीटर लॉन्ग वाइड हला 120 has two cross road माने cross road means एमती दिटा रोड जाइछि मिडिल रे क्रॉस करछन दी इच अदर को each road is 3 meter wide ए जो वाइड ता तांकर 3 मीटर अछि फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड ए जो क्रॉस रोड रहिला तार एरिया टा फाइंड आउट करिया पय पचारछि तो केमते हबो डायरेक्ट ए फार्मूला पुट करबा width केते अछि 3 लेंथ अछि 360 ब्रेथ अछि 120 minus 3 एतिकी आंसर आसीबो तो सॉल्व कर दबा 3 into 360 plus 120 केते होछि 480 480 minus 3 3 into केते हिजबो 477 into 3 1421 1421 होबा आंसर 21 ना 31
सॉरी 1431 डी है आंसर। क्लियर? क्लियर? ये क्वेश्चन थिला टोटल 2D ऊपर और बहुत सारा क्वेश्चन भी बाहर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कले और क्वेश्चन आसीबो बट एबे 2D पई एतिकी थिला 2D ऑलमोस्ट कवर हे गला बाकी रहला 3D ए 2D को बेस करी 3D भी अछि 3D रो नेक्स्ट क्लास रे हम 3D स्टार्ट करबा 3D रो फंडामेंटल पढि सला परे देन 3D रो क्वेश्चन ओरा डिस्कस करबा ठीक अछि तो आज पई एतिकी थाओ एटा 2D कंप्लीट हे गला नेक्स्ट क्लास रे हम 3D देखबा थैंक यू।